So, good morning everyone. So, this is the very first time you are seeing me in your life. I am seeing you guys most probably in my life. Yeah, so everybody from 12th standard appeared कि कोई BCom चल रहा है FY SY BAF. Which year? First year. Okay. And others are 12th appeared, right? So, you guys are confident of scoring 50% marks in 12th standard. You know the eligibility of CA foundation. हेलो, पता है ना कितना मार्क्स चाहिए 10th और 12th में? 50, correct? Okay, so today it is your first economics का session where we are going to just have a glimpse. Okay, we are just going to have a glimpse about what are we going to study as far as subject is concerned. So total 400 marks में से, अच्छा, to introduce myself, my name is Bhavin. Okay, and I will be guiding you all. I will never say I will be teaching you all. So I will be guiding you all towards the subject called as economics. Absolutely incorrect. Okay, the name of the subject is business economics. Okay. तो दिमाग में आएगा क्या पकड़ है यार, छोड़ना, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ही तो है. या इट अपीयर्स टू बी सेम बट एक्चुअली इट इज व्हाट डिफरेंट. सो व्हाट यू एक्चुअली स्टडीड इन योर 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स ना, वो था बच्चा इकोनॉमिक्स. अच्छा, हाँ बोलो, भले याद नहीं है लेकिन स्टिल से यस, यू स्टडीड 11th में इकोनॉमिक्स है. यस, व्हाट वर द चैप्टर्स लाइक पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका कोई फ्यूचर में रेलेवेंस नहीं है. वी नो, वी आर प्राउड दैट वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स इट. उससे अलावा और कुछ उसका अपने लाइफ में रिलेटिव इंपॉर्टेंस नहीं. सो देयर इज वेरी सेपरेट लीग एज फार एज सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 4, जिसका वेटेज इज वेरी गुड, 100 मार्क्स. हाउ मेनी एमसीक्यूज विल बी आस्क्ड? 100 MCQs will be asked. Each MCQ का weightage will be, ऐसा बोलते रहने क्या है, चुप चुप मेरे को पसंद नहीं है, 1 mark बराबर है. टोटल how many hours will be given to you? 2 hours. That is 120 minutes for 100 MCQs. That means for each MCQ on an average we have 1 minute and 20 seconds, where few MCQs will be like within a second वाले answers. और फॉर फ्यू एमसीक्यूज थोड़ा घुटने पे जोर आएगा. ओके, थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने को कि व्हाट कैन बी द आंसर. एंड फ्यू एमसीक्यूज तो कैसे रहेंगे पता है? एक तो बेस्ट चीज क्या है, पूछो क्या? गुड क्वेश्चन. कि एटलीस्ट वी नो आंसर इज फ्रॉम दिस 4 ऑप्शन. हेलो, है ना? इतना तो पता ना कि 4 में से. अब ICAI इतना सीधा तो कभी बना ही नहीं लाइफ में. अगर सीधा होता तो वो ICAI नहीं होता, राइट? सो सर्टन MCQs तो आपको ऐसे दिखेंगे कि यू विल फाइंड यार B भी करेक्ट लग रहा है और C भी करेक्ट लग रहा है. यू विल कम अक्रॉस सर्टन MCQs वेयर मल्टीपल ऑप्शंस विल बी करेक्ट. In such situation, what you should do? Number 1, you should again read the question slowly. You should again read the question slowly. ऐसा कुछ एक वर्ड शायद मिस कर दिया रहेगा कि हम लोग उसको नहीं पढ़ पाए थे. एंड सेकेंड, स्टिल आपने क्वेश्चन बराबर इंटरप्रेट किया, still you are finding multiple options as correct answer, then you have to go for nearest answer. So how to find that nearest? Everything will be taken care of. But the economics जो आप अब तक 11th 12th में पढ़ते आए हो, and the business economics which you are going to study in this CA foundation curriculum is completely different. Completely different. तो आप लगे सर क्या बात कर रहे हो यार, एक्सेप्ट वन, अदर्स तो जस्ट अपीयर 12th बोर्ड्स, है ना? हाँ बोलो यार. हाँ, so can you just read? अच्छा, by the way, your 12th standard was divided into 2 categories, microeconomics and
सो यहां पे भी आपको दो कैटेगरी दिखेगी. सो एज फार एज चैप्टर नंबर 1 to 5 is concerned, yeah, that is related to micro, and chapter number 6 to 10 is concerned, it is related to macro. Can you just read? थोड़ा visibility है कि zoom करूं? रीड कर पा रहे हो ना? So can you just read the headings of macro? 6th chapter का नाम क्या है? सर था ये, है ना? नेशनल इनकम था. अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर ये भी था. नेक्स्ट चैप्टर, सर ये तो कम है. इन 12th स्टैंडर्ड वी हैड मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया. सर ये तो कम है फाउंडेशन में. नेक्स्ट चैप्टर, वो दैट वाज फॉरेन ट्रेड इन इंडिया करके चैप्टर था. एंड लास्ट तो ठीक है, छोड़ दो, इंडियन इकोनॉमी. सो सर ये था, ये तो हमने पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में. But you know what you guys studied in this chapter 6, 7, 8, 9 of your 12th standard is just 3% of what we are going to study in foundation. कितना परसेंट? In short, पूरा नवा ही है. Except one chapter which is your favorite uncle, Alfred Marshall. बोलो Alfred बाबा की. In his book, in the year. हाँ, चैप्टर 2 आपको बहुत कुछ आता है. बट चैप्टर 2, कैन यू रीड द हेडिंग? व्हाट इज चैप्टर 2? थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कंसिस्ट्स ऑफ 4 टॉपिक्स ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड. ये एक ही टॉपिक में आपके 12th के 4 चैप्टर्स है. चैप्टर 3A जिस डिमांड, 3B that is elasticity of demand, then 2 which was utility analysis, and 4 that is supply. ये 4 चैप्टर का मिक्सचर is your 1 chapter, that is आपको कोई बुक मिला है? बुक नहीं मिला है. I'll just give you the weightage. Chapter number 1, that is economics का basics, it is for how many marks? Chapter number 2, demand supply, is for 15 marks. अच्छा, marks means उतने MCQs, because 1 MCQ means 1 mark. Okay. Then chapter 3, production and cost, is again 10. Market, अच्छा market भी आपने पढ़ा था, forms of market, but again it is very different here. Business cycle is for 5 marks. The most simplest chapter. Page number भी आप देखोगे ना, अगर दिख रहा है तो 161 से 167, that is 6 pages including 3 pages MCQs. So in short, chapter सिर्फ कितने pages का है? 3. Most simplest. Then determination of national income is for, नहीं हो रहा है पढ़ने को? हाँ, 15 marks. Public finance, money market, international trade, again for 10 marks. And Indian economy is, so 10 वाले कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 and 15 के 2, that is 30 comes to 90, and 5 marks वाले 2, that is 10 comes to 100 marks is what ICAI have prescribed. मतलब आपको अगर ये लगता है सर हमको है ना, अच्छा यू नो ना नेगेटिव मार्किंग, 1 right means how many marks and 1 incorrect means 1.25, क्योंकि आपने अटेम्प्ट किया प्लस नेगेटिव, दैट इज 0.25. बराबर है सर. वी हैव टू गेट हाउ मेनी मार्क्स इन इकोनॉमिक्स? 60 सी फॉर एग्जांपल. तो सर 3-4 चैप्टर छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, हाँ के ना? गुड, क्यों नहीं? आई शेयर यू व्हाट Jan 25 स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस्ड. This is prescribed. What I've written, weightage, marks, is nothing else but something prescribed. अब एक टाइम क्या पता है? Suddenly from Indian economy they asked 8 MCQs. अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था, आपने क्या 5 मार्क्स का है तो 5 MCQ आएगा, तो हमने तो छोड़ दिया वो चैप्टर. But suddenly they asked about how many MCQs from chapter 10? 8 MCQs. In short, कोई और चैप्टर कॉम्प्रोमाइज हुआ था, that was national income. In one attempt national income, अच्छा इसमें है ना, in this curriculum of business economics we'll also have sums.
So chapter like chapter number 2, that is demand supply, then chapter 3, chapter 4, chapter 6, chapter 8. So 5 chapters में there will be also along with theory क्या रहेगा? अरे बोला ना, हाँ. तो सम्स अचानक 15 मार्क्स का जो ये था ना नेशनल इनकम, उसमें से 12 मार्क्स के सम्स, ओनली 3 मार्क्स थियरी. So you cannot define the pattern of ICAI. पैटर्न आप डिफाइन कर सकता नहीं है. एंड वन मोर थिंग, पूछो क्या? गुड क्वेश्चन. आउट ऑफ 100, ओके, एटलीस्ट 3 MCQs ऐसे रहेंगे जो आपके कोई करिकुलम में नहीं. नॉट विल पार्ट ऑफ सिलेबस, नॉट अ पार्ट ऑफ करिकुलम, नथिंग. सडनली कुछ भी पूछ लेगा. ऑम्बड्समैन मीन्स, अब आपने लाइफ में पहली बार सुना रहेगा कि ऑम्बड्समैन होता क्या है. सुना है कभी? नहीं. पूछो क्या होता है? गुड क्वेश्चन. ऑम्बड्समैन इज अ इंटरमीडियरी, मिडल मैन बिटवीन RBI एंड कमर्शियल बैंक. करेंसी छापता कौन है अपने कंट्री में? बराबर है. वो बैंक्स के पास भी जाना चाहिए, तो वो पहुंचाने का काम किसका? रिप्रेजेंटेटिव कौन? ही इज एन ऑम्बड्समैन. नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस. आपको एक वर्ड नहीं दिखेगा इवन इन ICAI मॉड्यूल, बट स्टिल दे विल आस्क. दूसरा एक क्वेश्चन पूछा था, द वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया वॉज इनिशिएटेड ऑन. आपको पता है ना रशिया और यूक्रेन में तकलीफ है, वो पता है? हाँ चलो एटलीस्ट वो पता है. कब इनिशिएट हुआ था वो पता है? नहीं. इट वॉज February 2022. क्यों पूछते हैं सब? वाई व्हाट इज द कनेक्शन? आप बोलोगे रशिया यूक्रेन है भी नहीं है ना, इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रीज के साथ ट्रेड, तो आ गया. आप पूछोगे ओम्बड्समैन है ना, RBI मनी मार्केट, आ गया. यू कैन क्वेश्चन ICAI के इसमें कहां पे आया, आ गया. बट व्हाई डू दे आस्क? रीजन क्या है? ताकि किसी को 100 on 100 ना मिले. टिल डेट ICAI का इकोनॉमिक्स का हाईएस्ट स्कोर इज 97. हिस्ट्री ऑफ ICAI का इकोनॉमिक्स का किसी को भी पूरा मार्क्स ये लोग देते नहीं है. Are you guys getting me? But the most simplest paper of your life, believe me, will be economics. Easily, आराम से हंसते खेलते आप 70 तो क्रॉस कर ही लोगे आराम से. वेरी इजी पेपर ऑफ द रेको. मतलब बोलते हैं ना कि जितने भी पेपर्स आए ना, सब में कॉमन ये है कि इकोनॉमिक्स सिंपलेस्ट होता है. आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस. Yeah, and I will be guiding you all almost for all the chapters, okay, unless and until अगर कोई sharing रहा तो, because you will see me only on weekends, that is Saturday, Sunday. Other days, that is from Monday to Friday, I work in corporate, okay. So अगर इनके लेक्चर रहा भी नॉर्मल डेज पे तो इवनिंग में होएगा मेरा, या तो आप सैटरडे संडे को ही मुझे देखो. सो वी आर ऑलवेज गोइंग टू मीट फ्रॉम वीकेंड टू वीकेंड. तो हम वीकेंड में धमाल करेंगे. यस, एंड यू विल गेट अ स्टडी मटेरियल ऑफ कोर्स फ्रॉम प्रोफेशनल एकेडमी, बट उसके साथ आपके पास एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स का नोटबुक होना चाहिए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस स्टेटमेंट वाज व्हाट यू नो? एक्सक्लूसिव. पूछो क्यों? गुड क्वेश्चन. अभी कैसे हम कॉलेज वाले, कॉलेज कौन नोटबुक मेंटेन करता है सर? क्या आपकी एक ही नोटबुक होता है जिसमें हम पहले इकोनॉमिक्स दिखता है, बीच में अकाउंट्स भी दिखेगा, फिर थोड़ा 3-4 पेज छोड़ के लॉ भी दिखेगा, लास्ट पेज पे ड्राइंग भी दिखेगा, या किसी के नाम नंबर भी दिख जाएंगे, या मम्मी ने बोला रहेगा 2 किलो मग 2 किलो दानादार, वो लिखा रहेगा. बराबर है. तो इन माई लैंग्वेज सच बुक इज कॉल्ड एज रफ बुक. वेरी गुड, दैट इज रफ बुक. और मुझे खराब आदत है, और प्लस कैसा है, धीरे धीरे एडमिशन हो रहे हैं तो एक 15, 20, 25 स्टूडेंट्स रहेंगे, सो देयर इज वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो आई हैव अ हैबिट ऑफ चेकिंग द नोटबुक, और गलती से मुझे वो एक्सक्लूसिव की जगह पे वो रफ बुक दिख गई, तो वो आपकी लाइफ में नोटबुक थी. भूल जाने का कि आपने कभी ऐसा बुक भी बनाया था.
सिर्फ मुझे एक ही डिसिप्लिन चाहिए गाइस, इसका बेनिफिट आपको समझ में आएगा व्हेन यू 200 पेजेस का बस हो जाएगा, पूरा वसूल करके दूंगा मां कसम, पूरा 200 पेजेस का मैं वसूल, ऐसा मैंने आप 200 बोले लिखवाया हमारा 20 पेज बच गया, पूरा वसूल करके दूंगा. सो आई वॉन्ट एन एक्सक्लूसिव नोटबुक ऑफ 200 पेजेस फॉर इकोनॉमिक्स. आज भी लिखवाऊंगा पर आज लाए नहीं है तो आज ओके, फर्स्ट ड्यू मार्क, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से आपको लाना होगा. फिर अनदर थिंग, यू नीड टू कैरी खुद का पेन, खुद का पेंसिल, खुद का स्केल, खुद का इरेजर, खुद का शार्पनर. जनरली क्या होता है, डायग्राम्स बहुत सारे, इकोनॉमिक्स तो यू माइट हैव एक्सपीरियंस, देयर आर डायग्राम्स ऑल्सो. तो बाजू वाला पहला कर रहा है तब तक तुम आराम कर रहे हो, फिर तुम कर रहा है तो बाजू वाला आराम करने का. नो, शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन लाइफ में सब कुछ शेयर नहीं करने का. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. बराबर है. तो कैरी स्टेशनरी ऑफ योर ओन, ओके, एंड यू कैन यूज कैलकुलेटर. हो सके तो नॉर्मल कैलकुलेटर लाओ, मोबाइल यूज करना. एंड यस, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड इन एग्जाम. ओके, साइंटिफिक कैलकुलेटर समझता है, वो थोड़ा लंबा होता है, उसमें कॉस, थीटा, टेन से साइन और वो सब भी रहता है. दैट इज नॉट अलाउड इन एग्जाम. नॉर्मल कैलकुलेटर इज अलाउड इन एग्जाम. आई होप दैट्स एब्सोल्युटली क्लियर. श्योर? Any doubt, query, confusion, anything regarding the subject you want to ask me? Anything regarding subject you want to ask me? Sure. So छोटा सा ग्लिम्स देंगे. आई एम नॉट स्टार्टिंग पर्टिकुलरली विथ एनी स्पेसिफिक चैप्टर, but let us have a conversation and start something related to this economics. Okay, नोटबुक वगैरह लाए हो? आपके लेक्चर्स कब से स्टार्ट हुए? This is your first week or lectures started long back? This is first week, ना? चलो, फिलहाल कुछ नहीं लिखना, मैं आपको बोलूंगा वो लिखेंगे अपन, ठीक है? फर्स्ट नेक्स्ट 20-25 मिनट्स आप सबका ध्यान सामने होना चाहिए. Which subject we are going to learn in this CA Foundation curriculum? 8, एक नंबर. Let us start with what do we mean by the term what? बोला. So let us go from the known zone to the unknown zone. जो आपको आता है वो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं. ओके, थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ इकोनॉमिक्स सिंपल है. सो इकोनॉमिक्स आपने समझा रहेगा, सुना रहेगा. वॉज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? हाँ, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो आपका एक एमसीक्यू का आंसर आ गया. ये भी पूछते हैं कि इकोनॉमिक्स वॉज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज. अच्छा, इन ग्रीक इट इज नोन एज व्हाट? एक नंबर. इट इज नोन एज इकोनॉमिया. मेरा हैंडराइटिंग समझ रहे हैं आप लोग को? हेलो? हाँ, ओके. नाउ दिस oikonomia is made up of two words. Any idea? Very good. Number one, it is oikoi. Okay, when you pronounce, how will you pronounce it is? Oikoi. वापस बोलो. हाँ. And second is nomos. What is the second one? It is. So if we separately pronounce two words, that is oikoi and nomos. Together they are called as oikonomia. A Gujarati pronunciation, oikonomia. Okay, but there is oikoi and nomos. What do we mean by this term oikoi? अच्छा, oikonomia का कभी मीनिंग आप लोग को पता है? पता है? थोड़ा आइडिया. चैप्टर नंबर 1, 12th स्टैंडर्ड. नहीं आता तो पास बोलो. Very good. Okay. Now, when I say oikoi, it is nothing else but household. What do we say? Oikoi is? And nomos is nothing else but management. ये full form नहीं लिख रहा हूँ, short form लिख रहा हूँ, ठीक है? What is nomos? It is
Huh? So when I club these two words, that is oikonomia, it is called as galat. Management of household. What do we say it is called as? एक MCQ ऐसा आया था. Oikonomia means option A, household management. Option B, management of household. Option C, household. And option D, management. So what will be the answer? Exactly. एक एक वर्ड से आंसर चेंज हो जाए. ओके, सो नाउ व्हेन आई क्लब दिस टू वर्ड्स, ओइकोनोमिया, इट इज मैनेजमेंट ऑफ. ये हाउसहोल्ड में कौन आवे? व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म हाउसहोल्ड? नहीं आते तो क्या बोल लेगा? ओके, हाउसहोल्ड में तुम आवे, मैं आवे, सामने वाले खिड़की में जो अंकल आंटी है वो लोग आवे. सो हु वी ऑल आर. ना सिंपल भाषा में आप और मैं कौन है? ह्यूमन बींग्स है ना. भले मेरा बर्ताव जानवर जैसा है लेकिन मैं है नहीं. सो हु वी, वो सामने वाले अंकल आंटी, हु वी ऑल आर. अरे बोलो ना यार. सो ऑल ह्यूमन बींग्स ऑन दिस अर्थ बिलोंग्स टू. Consumer belongs to, businessman belongs to, business belongs to, business firm. Okay, if I say Bhavin belongs to, मैथ्स कौन पढ़ाता है? मैथ्स का लेक्चर हुआ. निशित belongs to, अकाउंट्स कौन ले रहा है? अनूप belongs to, लॉ चालू हुआ. ओह, विश्वनाथ सर belongs to, Professional Academy belongs to. Okay, Prasad sir is the owner of Professional Academy. So Prasad sir belongs to. क्यों? दिखते हैं ना, इंसान है, बराबर है. बट क्या Professional Academy is a human being? No. तो वो क्या है? अकाउंट, सॉरी, ओसी की भाषा में a business is an artificial person. तो वो हाउसहोल्ड में नहीं आ सकता. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस एंड अ बिजनेस फर्म. और बिजनेसमैन और बिजनेस में फर्क है. एंड मेजरली इकोनॉमिक्स वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू. आर यू गाइज गेटिंग दिस? यस और यस? Correct. So in short, household means human beings, and whenever we study human beings, it is a study of social science. Which science? क्या बोला है यार? Once more, which science? Exactly. अच्छा, साइंस भी बहुत. What is science? Only word science क्या होता है? Logic. I would say systematic. हाँ, proven theories, absolutely correct. You can say systematic body of some knowledge. Where proven theories का बात करो ना, it is natural science. कि भाई 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen will give you. साइंस कहेंगे तुम लोग. अच्छा ठीक है सर, बेसिक है. CO2 पूछो, H2O पूछो. बाकी हमको एक स्कूल में था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अमीबा, तुजीबा, सगळ्यांचीबा. उसके अलावा हमको कुछ भी समझा नहीं है. हमारे लिए आज भी हार्ट मतलब ये. बाकी रियल हार्ट क्या होता है वो तो हमने स्कूल में सीखा था. सो ठीक है. सो वेलकम टू कॉमर्स. या, so that is called as what science? You know, natural science, physical science, exact science. But when we talk about, हाँ पढ़ो और एक बार इंग्लिश में क्या लिखा है? So social means societal. Societal means society. Society में कौन रहते हैं? Human. हम नहीं बोलेगा. Who we are? We are human beings. So social science is a study of human behavior. आने दो और एक बार. क्या बोला? It is a study of. अभी इन्होंने समथिंग कुछ तो कहा था कि सर प्रूवन रिजल्ट्स एंड समथिंग. कैन यू प्रेडिक्ट और प्रूफ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन? क्या आपका, मेरा छोड़ो, आपका बिहेवियर सब जगह सेम होता है? सपोज आप यहां से घर गए, ओके, लेक्चर छूटा, घर गए,
घर पे कोई नहीं था, व्हाट विल बी योर बिहेवियर? जूते कैसे निकालेंगे? बैग, फ्रिज से बॉटल लिया, सोफे पे ऐसा आधा ऊपर आधा नीचे, टेलीविजन देखा, चालू गया. दिस इज योर बिहेवियर, राइट? हेलो, हाँ, ऐसे बैठे थे बस, तो नाक में इचिंग हुआ. सो वॉट एवर रॉ मटीरियल केम इन योर हैंड, सोफा के नीचे, तो कौन उठेगा बेसिन तक यार? कंसीडर आप घर गए, घर पे गेस्ट बैठे, व्हाट विल बी योर बिहेवियर? ऐसे निकलोगे जूते, ऐसा है अंकल मजा, will be your behavior such kind of behavior? No. So behavior differs person to person and also situation to, exactly. So something which cannot be proved is called as empirical science. Something which you can prove, H2O, CO2, prove. Laboratory में ऐसा mixture होता है, proven. That is exact science. And here we are not going to study any exact science. It is empirical science, or you can also say as behavioral science. Which science? जोर से बोला. Okay, and that is study of whose behavior? Now when we study human behavior, blue color already use हो चुका है. Let us take another color. Which color do you want? Green. Okay. So when we study human behavior, दो चीज का स्टडी है. कौन सी दो चीज? नहीं आता है तो क्या बोलने का? Okay. On one side it is, दिख रहा है कि थोड़ा बड़ा लिखूं? नहीं दिख रहा है? नहीं, कॉमा दिख रहा है. ओके, ends, and on other side it is, चलो, what is ends and what is means? wants and demand. एक सही है, 50% करेक्ट. When we talk about the term ends are nothing else but our, अरे बोलो यार, ये wants कितनी कैटेगरी की होती है अपनी? 3. वेरी गुड. कुछ तो बोला. कौन सी? नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड luxuries. Okay, but when we talk what are wants, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया. But what is the meaning of the desire to, okay, desire to acquire something? Now that can be a necessity, comfort, luxury, anything. बराबर है. And when we talk about our wants, are they limited? के नाना बोलो, नाना. Are they limited? They are always, exactly. So wants of every human are always, but the means matlab, so another was not wants and demand, it was wants and resources. So means को सिंपल भाषा में हम का कही? Resources. So whenever the word in MCQs comes means, तो आपका दिमाग का मेंटोस क्या बोलना चाहिए? मतलब यहां पे हम रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं. अच्छा, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ रिसोर्सेस फ्रॉम इकोनॉमिक सेंस? Okay, you know factors of production. How many? Land, labor, capital, entrepreneurship. बराबर है. These are nothing else but resources. And when you compare resources with your unlimited wants, because when you start compiling your wants, मेरे को शूज चाहिए, मेरे को बैग चाहिए, मेरे को घड़ी चाहिए, मेरे को कपड़े चाहिए, मेरे को मोबाइल चाहिए, मेरे को लैपटॉप चाहिए, मेरे को बाइक चाहिए, मेरे को यूरोप घूमने जाना है, मेरे को मम्मी बोलेगी रेफ्रिजरेटर चाहिए, मेरे को एसी चाहिए, मेरे को वॉशिंग मशीन चाहिए, so when you compile your wants, it is, अब आपके
घर पे जाके पापा को पूछने का, पापा पूछेंगे किसने बोला पूछने को, तो मेरा नाम लेने का नहीं, पापा को पूछेगा पापा चलो आपके अकाउंट में कितना पैसा है बताओ तो जरा, तो पापा बोलेंगे चलो ये अकाउंट में इतना है, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये क्या थे विचार? व्हाट आर दिस? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिसोर्स, नॉट ओनली रिसोर्स, दैट इज मनी। क्योंकि कोई भी वांट सेटिस्फाई करना है तो जेब में क्या चाहिए? रोकड़ा, पैसा चाहिए। यस और यस? सो रिसोर्सेज आर व्हाट? गलत। व्हाट आर दिस? विचार। आई एम नॉट कंपेयरिंग रिसोर्सेज विथ इटसेल्फ, I am comparing these resources with my unlimited wants बोलना है, okay? I am comparing these resources with my, so the resources become, एक बार ना दूसरी बार थोड़ी यहां बोलेगा यार, resources become थोड़ा इकोनॉमिक टर्म, इकोनॉमिक टर्म, आप इंग्लिश टर्म यूज करो। सी योर आंसर्स आर करेक्ट, इट इज लिमिटेड, नॉट सफिशिएंट, बट वी कांट यूज नॉर्मल टर्म, इट हैज टू बी सम इकोनॉमिक टर्म। Absolutely correct. The resources are scarce. आप मीनिंग पूछोगे तो सेम है, लिमिटेड, बट वी कांट यूज दैट टर्म। व्हाट वी हैव टू यूज इज, कुछ नोटिस किया आपने यहाँ पे सामने? कुछ नोटिस कर रहे हैं? कॉमन सेंस नोटिस करना, नहीं? एरो और स्केर्स के बीच में गैप है। लिखना देखो, जैसे वॉन्ट्स के नीचे एरो है और बराबर एरो के नीचे अनलिमिटेड तुरंत लिखा है, कोई गैप रखा नहीं, इसलिए मैंने बोला कॉमन सेंस था। बट हियर देयर इज अ गैप बिटवीन एरो एंड स्केर्स, मींस देयर इज समथिंग बिफोर स्केर्स। व्हाट आर दिस? अनलिमिटेड वॉन्ट्स। व्हाट आर दिस? बट कौन से स्केर्स रहेंगे पता है? पूछो कौन से? गुड क्वेश्चन। इट इज रिलेटिवली स्केर्स। क्या बोला? इट इज। व्हाई द वर्ड रिलेटिवली? क्यों? क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। एक्चुअली अगर मैं खाली रिसोर्सेज देखूं, बहुत पैसा है, 2 टाइम का ठूस पाऊंगा, बहुत पैसा है, बट खाली ठूसना इज नॉट माई वॉन्ट। आई एम कंपेयरिंग दिस विथ माई, so in comparison of these unlimited wants, they are another MCQ. The means possessed by individual are A. Scarce, B. Relatively scarce, C. Limited, D. Unlimited. Are you guys getting this? अरे हाँ के ना? इन माई एग्जाम्पल हमने कौन सा रिसोर्स लिया? इन माई एग्जाम्पल मनी, बराबर है। एंड दिस मनी एज अ स्केर्स रिसोर्स विल ऑलवेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। विच यूजेस? जबरदस्ती आया, हाँ। संडे बिगाड़ रहे, हाँ। चॉइस है ना, सीधा बैठो, ऐसे फाइन, हाँ। Those scarce resources have which uses? What is alternative uses? हाँ, मेरे पास 20 रुपया है फॉर एग्जाम्पल पॉकेट में है, इज इट कंपल्सरी कि उससे मेरे को खाली वड़ा पाव खाने का? नहीं, भी कर सकता है। आई डोंट डू इट, डोंट ट्रीट मी रॉन्ग, ओके, बट वी हैव अ चॉइस। सी यस, मतलब मनी का कोई स्पेसिफिक यूज इट हैज। हु एम आई आउट ऑफ 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? आउट ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हु एम आई फॉर प्रोफेशनल एकेडमी? गलत, लेबरर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेबरर, भाविन लेबरर, and my teaching economics, my service of teaching economics is, तुम किसके लिए आए आज? मेरे को देखने, इतना फायदा नहीं है।
अच्छा ऐसा है कि 1.5-2 घंटा मैं तुम्हें देख रहा है, तुम मुझे देख रहे हो, देखा देखी में तुमको पूरा सब्जेक्ट समझ जाएगा? बेशर्मो ना बोलो। हाँ, यू आर हियर नॉट फॉर मी, यू आर हियर फॉर गेनिंग नॉलेज। मतलब आप मेरे लिए नहीं, मेरी सर्विस के लिए आया है। तो हु इज मोर इंपॉर्टेंट? इज भाविन इंपॉर्टेंट? नो, हु इज मोर इंपॉर्टेंट? इसलिए हम लोग फैक्टर्स में लेबरर नहीं लिखते, लेबर लिखते। Are you guys getting this? So out of 4 factor of production, I am labor. Is it necessary that I have to teach only in professional academy? I will teach in professional, but I have a choice. अच्छा, जरूरी है कि मेरे को खाली टीचिंग ही करने का? मैं और कुछ काम भी कर सकता है। सो ए, अच्छा लैंड, ओके, लैंड। अब यहाँ ये पीस ऑफ प्रीमाइसेस में क्या चल रहा है? क्लास। कुछ और भी चल सकता था। सो एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच आर रिलेटिवली स्केर्स विल ऑलवेज हैव विच यूजेस? नाउ दिस बिकम्स योर मीनिंग ऑफ टर्म इकोनॉमिक्स। सो गाइज, मेरे बोलने के बाद रिपीट करना, इकोनॉमिक्स इज अ विच स्टडीज, विच इज नथिंग एल्स बट विच साइंस as a relationship between, where ends are nothing else but your, which are always, means are the, which in comparison of unlimited wants are, and those relatively scarce resources will have who we are. सो ये लेफ्ट साइड में जो भी लिखा वो हमारे बारे में है। हेलो, हाँ। सपोज, विच पोज? सपोज you want to buy mobile, okay? हाँ, ओके। 3-4 वॉन्ट बोलो ना आपके, वॉन्ट्स। संतुष्ट लोग हैं। यू वॉन्ट टू बाय शूज, एक दो तो, हाँ, बैग, लग्जरी बैग, बैगेट, क्लोथ्स, एक और, थाईलैंड। अच्छा, ट्रिप, सीधा थाईलैंड। ओके, अच्छा, टाप, मेरे को सुना दिया थाईलैंड। बच्चा बड़ा हो रहा है। थाईलैंड, ट्रिप लिख दिया, चलो ना। दैट इज कैन ऑल्सो बी योर वांट, यू नो, ट्रिप। व्हाट आर ऑल दिस? वेरी गुड। सेटिस्फाई करने के लिए क्या चाहिए? मनी। आपके पास 50,000 रुपया है। यू हैव हाउ मच? Can you satisfy all wants in 50,000? Means the resources which you possess are relatively in comparison of your. What will you do in such situation? Decrease the impossible. Human कभी नहीं कर सकते। सॉरी, एडजस्ट करना पड़ेगा, ये करेक्ट है। नाउ इकोनॉमिक टर्म दो इसको, एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रायोरिटीज, करेक्ट, प्रायोरिटाइजिंग, जिसको और बेटर वर्ड सो वॉन्ट्स विल बिकम ग्रेडेबल। आई रिपीट, क्या बोला? वॉन्ट्स विल बिकम व्हाट? कि भाई इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बोलो, ज्यादा आउट ऑफ दिस ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रिप। सर रिलैक्स होना है। सर इतना बोर्ड एग्जाम स्ट्रेसफुल था तो ट्रिप पे जाना है। जरूरी नहीं है। इफ हिज प्रायोरिटी, ये क्या हो गया? तो अभी क्या करने का? नया नहीं, वही चालू करने का ना। तो मैक्सिमाइज कैसे करने का?
सही हुआ तो सही। अच्छा अच्छा, अनेबल टू, ओके। हाँ वैसे भी डेमो है, ऑनलाइन कोई है क्या? लेकिन ये क्या हो गया? हाँ अब बराबर है ना? हाँ ठीक है, मतलब ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग चालू है। ओके हाँ, कहाँ था मैं बोला? हाँ, व्हाट इज योर नेम टुडे? पाशवा, वेरी गुड। सो पाशवा का प्रायोरिटी इज टू गो टू ट्रिप। जरूरी है सबका वही प्रायोरिटी है? नहीं, मैडम बोलेंगे मेरे को तो बैग चाहिए, वो तेरा कोई प्रायोरिटी? मोबाइल चाहिए। सो व्हाट इज दिस? इन इकोनॉमिक्स इफ द ग्रेड्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू इज नोन एज व्हाट? Grade different, gradable. It becomes subjective. When I say subjective means it differs from person to, exactly. So when I say wants become gradable, so there comes the economic problem of choice making. You have to make a choice कि मेरे लिए फिलहाल ज्यादा important क्या है? You are managing your resources to satisfy your, I repeat, you are who you are? Human means belongs to नहीं, बिजनेस फर्म के हाउस होल्ड। इन शॉर्ट मैनेज कौन कर रहा है? मैनेज कौन कर रहा है? Hence economics is called as management of funds. तो आज समझा आप मैनेज कर क्या रहे हो? अरे हाँ के हाँ, what are you managing? You are managing your unlimited wants within those relatively by what? Choice make. This is what economics is. समझा कि नहीं? Are you sure? Okay, yes. You know, somebody gives the poetry, he is known as, somebody writes the book, is called as author, okay, and someone who gives the concept of economics are called as एक number. And there are how many types or categories of economics? Sorry, एक लिख देता हूँ इधर. So any person who gives the concept of economics is called as economists. Anybody? How many categories or types of economists? 3. Very good. एक number. Very good. What is the difference between them? बीच में बैठा हुए है और जो आज बैठा हुए है वो मॉडर्न. स्लाइड इनकरेक्ट. अच्छा, हु इज द पूज्य पिताजी ऑफ इकोनॉमिक्स? बराबर है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ही वॉज विच इकोनॉमिस्ट? वाई? व्हाट? नहीं यार, ऐसा पुराना नया वाला कोई लॉजिक नहीं है. एनीबडी एल्स? हाँ, तो पुराना नया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? चेंज द वॉइस. एक ग्रामर में आता है, चेंज द वॉइस. एनीबडी? एनी रफ? नियर है तू. Laissez faire means no government interference. So focus is on capitalist economic system. बराबर है ना? It's a part of it. Okay, if I want to say clear bifurcation, a very clear bifurcation between classical, neoclassical, any economist whose economics is wealth oriented. Which oriented? इसका बुक का नाम याद रहेगा ना? An inquiry into the nature and causes of
वेल्थ ऑफ नेशन 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 1. हाँ हाँ बोलो, खाली अच्छा लगेगा, भले अपने को याद नहीं है, लाइफ में कॉन्फिडेंट होने का. सो एनी इकोनॉमिस्ट का डेफिनेशन वाज वेल्थ ओरिएंटेड. आर एनी इकोनॉमिस्ट whose definition is or are welfare oriented. Which oriented? Your favorite uncle. And any economist whose definition is बोलो यार, oriented are called as which economist? एक बात पूछो, what is the difference between growth and development? डिस्टिंग्विश बोल रहे हैं. ओके, विच इज क्वांटिटेटिव. आप काउंट किसको कर सकते हैं, ग्रोथ के डेवलपमेंट? एग्जैक्टली. आप 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में गए, आपका क्या हुआ? एग्जैक्टली. आप जब पैदा हुए इतनों से थे, आज इतनों से हो गए, आपका क्या हुआ? ऐसा थोड़ी है, नहीं, ग्रोथ मेंटल डेवलपमेंट होता है. ऐसा थोड़ी है कि ये हैप्पी बर्थडे वाले दिन सबने ब्रेन खींचा, आपका थोड़ा मगज बड़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है ना. दैट इज मेंटल डेवलपमेंट एंड फिजिकल ग्रोथ. बोलने में भी हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल एंड मेंटल. मेरा क्लासिकल किस पे था? नियो क्लासिकल. आउट ऑफ वेल्थ एंड वेलफेयर आप क्वांटिफाई किसको कर? अच्छा, बाय द वे, व्हाट इज वेल्थ? पैसा. एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. एनीथिंग विच इज मनी एंड मनीज वर्थ. आई एम वेयरिंग अ गोल्ड ज्वेलरी, दैट इज व्हाट? नो, दैट इज मनीज विच इज माई वेल्थ. वॉलेट में मेरे पास कैश है, ऑल्सो माई wealth. I have a 3 BHK flat, I have a car, that's my money, and money's worth are both considered as what? मेरे पास कितना पैसा है काउंट कर सकता है, कितना घर है काउंट कर सकता है, स्क्वायर फीट, कितनी गाड़ी है उसका प्राइस क्या काउंट कर सकता है. एनीथिंग विच यू कैन क्वांटिफाई इज वेल्थ के वेलफेयर. इन शॉर्ट, ग्रोथ इज नथिंग एल्स बट डेवलपमेंट. आप कितने इंटेलिजेंट हो वो काउंट, बट दैट इज वेलफेयर, जिसको आप काउंट, वेलफेयर को आप काउंट कर सकते हैं. सपोज मम्मी ने आज मस्त घर पे जाके आपके सामने चीज पाव भाजी, मसाला पापड़ और स्वीट लस्सी बनाया, और आपने वो चीज पाव भाजी, पाव बटर पाव का टुकड़ा लिया, थोड़ा चीज पाव भाजी, 40 मजा आया मेरे को, 40. ऐसा बोलेगा क्या? अब बोलेगा तो नॉर्मल है कि डैश हो गया आप. डैश मतलब पागल. डैश मतलब पागल. ऐसा बोल सकता है क्या? कैन यू क्वांटिफाई? वेलफेयर कांट बी क्वांटिफाई. And if you cannot quantify, डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव इन नेचर. ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट इज. सो इन शॉर्ट, डेवलपमेंट बिकम्स व्हाट? So growth and development means talking about or considering both the aspects, that is wealth and are my which economist? Modern. So henceforth वो era नहीं बोल रहा. If someone asks you what is the difference between classical, classical are those whose focus is only on, neoclassical are those whose focus is on, and my modern ka focus is on, that is both wealth and wealth. This was a small introduction on what do we mean by इकोनॉमिक्स. ऐसा कुछ है जो नहीं समझा है? पक्का? मैंने जैसे लिखा है आप लोग वैसे लिखो, फिर थोड़ा कुछ और लिखूंगा इन योर नोटबुक. कोई चैप्टर हेडिंग नहीं देना, जस्ट अ नॉर्मल थिंग. एंड प्लीज आज अगर आप नोटबुक नहीं लाया है, दैट्स ओके. नेक्स्ट लेक्चर से एक्सक्लूसिव नोटबुक लेके आना.
डन. चलो लिखो ना इसके नीचे, नॉर्मल स्टेटमेंट में लिखना. द फंडामेंटल प्रीमाइस, द फंडामेंटल प्रीमाइस, PREMISE, द फंडामेंटल प्रीमाइस ऑफ इकोनॉमिक्स was given by Lionel Robbins, LIONEL, Lionel Robbins, ROBBINS, Lionel Robbins, full stop, continue. He states that human wants are always unlimited. He states that human wants are always unlimited and resources are relatively scarce. And resources are relatively scarce, and hence every human will face the economic problem of choice making. Will always face the economic problem of choice making. नेक्स्ट पॉइंट, एक लाइन छोड़ के, आपको पता है देयर आर, एक 2 मिनट सुन लो ना, इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांचेस है. कौन से? Who gave this 2 branches of economics, that is micro and macro? Sir Ragnar Frisk. He was from which university? Oslo. Okay, he was which economist? Norwegian economist. सर ये सब याद रखना पड़ता है? हाँ. MCQ में आता है? हाँ, तुम्हें लिखवा देगा. He was the one who coined this concept of micro and डिफरेंस. दोनों के इस स्पेलिंग में एक किच लेटर का फर्क है, दैट इज आई एंड आई. आई स्टैंड्स फॉर व्हाट? अरे बोला. ए स्टैंड्स फॉर 8 स्कॉलर. ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट. ओके, यू नो प्रोफेसर मैकडॉनल्ड्स वाले नहीं, मैककॉनल. Any idea what he said about micro macro? Okay, suppose आप संजय गांधी नेशनल पार्क में गए. कहां पे वो? बोरीवली. ओके, संजय गांधी नेशनल पार्क थाने येऊर से भी कनेक्ट होता है, बोरीवली. अब जैसे ही नेशनल पार्क में एंटर, क्या देखा आपने पता है? वाओ, ट्री. क्या देखा आपने? अच्छा, मैंने डायग्राम में मेनी ट्रीज बनाए कि 1 ट्री? सो इज दिस माइक्रो के मैक्रो? आई के ए? थोड़ा आगे गए आपने, वही टाइप का बहुत सारा ट्रीज. दिस इज 1 ट्री के मेनी ट्रीज, मतलब माइक्रो के मैक्रो, आई के ए? एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. मेरा लैंग्वेज आपने सुना नहीं. आई सेड, थोड़ा आगे गए आपने वही
टाइप के बहुत सारे ट्रीज देखे. सो स्टिल द काइंड ऑफ ट्री, द कैटेगरी ऑफ ट्री इज इट इज स्टिल माइक्रो. हाँ, लेकिन समझो कि आपने ना पहला ऐसा वाला पेड़ देखा, फिर ऐसा पाइन ट्री देखा, फिर कोकोनट ट्री देखा, खाली बंबू देखा. सो नाउ इज दिस वन ट्री के मेनी ट्रीज, वन टाइप के डिफरेंट टाइप्स. सो दैट बिकम्स व्हाट? दैट बिकम्स फॉरेस्ट. स्टडी ऑफ फॉरेस्ट इज मैक्रो. सो व्हेनेवर वी एग्जामिन वन ट्री or many trees of it is, but whenever we examine entire becomes, that's the difference. इसलिए आपने ना डिमांड चैप्टर में हाँ बोलना, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड सीखा था. से यस, व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? डिमांड मेड बाय अ कंज्यूमर फॉर मेनी कमोडिटीज के अ कमोडिटी, single commodity. And what was market demand? It is many consumers but demanding a commodity ke many commodities. Incorrect. Market demand was many consumers demanding a commodity. देखो डिमांड तीन तरीके के, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड. When I say individual demand for a pen made by a consumer, market demand, demand for a pen made by, बोलो यार, but demand for different pens demanded by, that becomes your aggregate. इसलिए इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड आपने दोनों डिमांड में पढ़ा था जो माइक्रो में आया. आर यू गाइस गेटिंग दिस? यस और यस? नेक्स्ट पॉइंट, सर रैगनर फ्रिस्क. ऐसा हम लोग पेड़ वेड़ ड्रॉ नहीं करेंगे नोटबुक में, स्टेटमेंट में लिखवाता हूं. सर रैगनर फ्रिस्क. इनकेस आपको ई स्पेलिंग चाहिए, RAGNARFRISCH, रैगनर फ्रिस्क. फ्रॉम ओस्लो, OSLO, ओस्लो यूनिवर्सिटी, ब्रैकेट में नॉर्वे. नॉर्वे लिख के रखो ताकि आपको याद रहेगा कि ये कहां के इकोनॉमिस्ट थे, नॉर्वेयन कहते उसको. फिर अच्छा, अपने पूज्य पिताजी कहां पे थे? पिताजी कौन? हाँ, इसे क्या बोला? बाप नहीं बदलने का. देख, बाजू वाले अंकल अच्छे हैं तो उसको डैडी नहीं बोल सकते. हा? पापा एक ही है, फादर एडम स्मिथ. वो कहां के थे? हाँ, कोई तो बोला यूरोप में. देर आर 28 कंट्री. आंसर है तो परफेक्ट दे दिया. यूरोप कंट्री आप तय करो. अच्छा, ही वॉज बोर्न बॉट अप एवरीथिंग इन लंदन, बराबर है. लेकिन वो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट के नाम पे जाते हैं. क्यों? वो चैप्टर नंबर 9, बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट हिज ओन गवर्नमेंट. इंग्लैंड ने, लंदन मीन्स इंग्लैंड, तो यूके ने कभी भी एडम स्मिथ को इज्जत दिया, वो इकोनॉमिस्ट का पदवी दिया स्कॉटलैंड ने. हेंस ही इज नोन एज स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट. ये सब कुछ मैं लिखाऊंगा आपके पूरे करिकुलम में. गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एमसीक्यू में ये सब आता है. आर यू गाइस गेटिंग दिस? ओके, नॉर्वे लिखा, ब्रैकेट क्लोज. कॉइंड टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉइंड, COINED, coined two branches of economics, that is I dot E dot वाला, that is micro and macro. माइक्रो एंड मैक्रो, सेम पॉइंट लेकिन नेक्स्ट लाइन में लिखना है आपको. माइक्रो वॉज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड mikros. Micro was derived from Greek word mikros, MIKROS, from Greek word mikros,
विच मीन्स, अच्छा मिक्रॉस को है ना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालना ना, मिक्रॉस विच मीन्स स्मॉल और मिलियनेथ पार्ट, विच मीन्स स्मॉल और मिलियनेथ पार्ट, comma, whereas macro was derived from Greek word, whereas macro was derived from Greek word macros, makros, macros, which means large or aggregate units, correct, large or aggregate units. Full stop. Again same point but next line. According to McConnell, spelling ध्यान से, MC फिर कैपिटल CONNEL, according to McConnell, comma, open double inverted commas, microeconomics is examining, microeconomics is examining one tree or many trees of same type. Microeconomics is examining one tree or many trees of same type, comma, whereas macroeconomics is the study of, whereas macroeconomics is the study of entire forest. Macroeconomics is the study of entire forest. Close double inverted comma. नहीं मिलेगा। फिर मुझे एक दो पॉइंट और लिखवाने थे। रिलैक्स फॉर 2 मिनट्स। आज अपना 12-10 तक हो जाएगा सेशन। टुडे इट वाज जस्ट अ डेमो टाइप्स लेक्चर। आपको मेरे सब्जेक्ट मतलब इको का बुक नहीं मिला कि कोई भी सब्जेक्ट का बुक नहीं मिला है? किसी का भी नहीं मिला है? मिलेगा मिलेगा, फीस भरा है ना, मिलेगा, सब मिलेगा। यू मी जस्ट 1 मिनट। ओके, 3-4 इकोनॉमिस्ट के बुक्स के नाम भी आपको याद रखने हैं, सो प्लीज राइट दैट। नेक्स्ट पॉइंट, एक के नीचे एक लिखते जाएंगे, ठीक है? आई थिंक दिस इज योर पॉइंट नंबर 3 ना, फिर 4 जो भी है। नेक्स्ट पॉइंट पहले लिखो, एडम स्मिथ। एनीबडी?
बुक का नाम एंड ईयर बोथ. Okay, put hyphen and write the wealth of nations. The wealth of nations. Bracket में 1776 1776. नेक्स्ट लाइन एक के नीचे एक. अल्फ्रेड मार्शल. प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. प्रिंसिपल्स के स्पेलिंग में लास्ट में PLES. प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ब्रैकेट 1890. नेक्स्ट लाइन. L. Robbins. L. Robbins. L. Robbins वैसा. Put hyphen and write small dash an essay on an essay ESSAY an essay on nature and significance of economic science. An essay on the nature and significance of economic science. ब्रैकेट में 1931. 1931. J.M. Keynes. Next line. J.M. मनसुख भाई M. Keynes. KEYNES. जगजीवन दास मनसुख भाई कीन्स. ऐसा नहीं है जॉन मेनार्ड कीन्स है. J.M. कीन्स. ये था आपको 12th में. कीन्स ट्रेड साइकिल का एक पार्ट है जो उन्होंने दिया. नेशनल इनकम गवर्नमेंट रिलेटेड वॉज एवरीथिंग गिवन बाय कीन्स. पब्लिक फाइनेंस में कीन्स आया था. हाइफन डैश. बुक का नाम थियरी ऑन एम्प्लॉयमेंट कॉमा इंटरेस्ट एंड मनी. एम्प्लॉयमेंट कॉमा इंटरेस्ट एंड मनी. ब्रैकेट में ईयर लिखना 1936. क्लियर है. चलो लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर. अब से 10:35 से लेके अब तक 12 में 5 काम तक जो भी बकवास किया ना हमने वो एवरीथिंग रिलेटेड टू व्हाट इकोनॉमिक्स. बट हम थोड़ी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं गाइस. द सब्जेक्ट इज व्हाट. So now what is business economics? Let me start with an example. It is just an example. Suppose मैं आपको 20 लाख रुपीस दिया. Okay, just an example. ये काल्पनिक है, इससे जुड़े हर पात्र वास्तविकता में संबंध नहीं रखते. Suppose I give you how much? 20 लाख रुपीस. ये 20 लाख में आप क्या करेगा? बोलना नहीं, घूमने जाएगा नहीं है वो. डोंट बी अ कंज्यूमर, बी अ बिजनेसमैन. इन 20 लाख रुपीस आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो? सोचो थोड़ा. 20 लाख में कौन सा बिजनेस कर सकते हो? एनी कोई भी, मतलब ऐसा नहीं लिख सकता ना कोई भी. हाँ, क्लासेस. ओके ओके. कोचिंग इंस्टीट्यूट. अनदर 20 लाख में क्या हो सकता है? क्लाउड किचन. वेरी गुड, गुड कॉन्सेप्ट. क्लाउड किचन. एनीबडी यू नो ना व्हाट इज क्लाउड किचन? मतलब खाली डिलीवरी पहुंचाना, डायरेक्ट ऐसा रेस्टोरेंट नहीं खोलना है अपने को. ओके या और जगह है. तीन आ जाएंगे. 3 मैं एक बोलूं. स्टेशनरी शॉप. छोटा सा स्टेशनरी का शॉप डाल सकता हूं मैं. 20 लाख. सॉरी, क्लोथिंग. ओके, दैट इज ओके ठीक है. क्लोथिंग
एक लास्ट बोल दो ना, लास्ट छोटा सा जगह, कोई भी रैंडम, सॉरी ज्वेलरी ना, 20 लाख में 10 ग्राम मान 200 ग्राम मान आएगा गोल्ड का, 90,000 तो भाव हो गए। एनीथिंग? ओके, वड़ा पाव स्टॉल है ना, ऐसा रास्ते पे वड़ा पाव का स्टॉल तो डाल सकता है ना ऐसा, बराबर है। सो व्हाट आर दिस, व्हाट आर दिस, व्हाट आर दिस, नहीं, व्हाट आर दिस types of business means you evaluating various course of action or options। क्या किया आपने? इवेल्युएट किया। क्या इवेल्युएट किया? खाली लास्ट नहीं पढ़ना था, पूरा पढ़ना था। व्हाट डिड यू इवेल्युएट? कि मैं 20 लाख में, 20 नहीं, मैं 20 लाख में क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकती है। You evaluated. Can I ask you one question? Okay, good. Can you start all businesses in 20 lakhs? Huh? Nice question. Can you start all in 20 lakhs? Huh? 20 लाख में सब हो जाएगा, सब 20 लाख में सब हो सकता है। नॉर्मल है कि डैश हो गया, ये डैश हो गया। हाँ, मेरे को बोलो 20 लाख में सब हो सकता है, तो क्या एक, तो आपको क्या करना पड़ेगा? That is what economics, but this is not economics. You have to go for, okay, you have to go for rational, कोई तो बोला, very good. It is all about making decisions. It is all about rational decision making. So if you ask me, what is the one word difference between economics and economics is all about choice making, but business economics is all about that decision. अच्छा, इसमें से आप कौन सा सिलेक्ट करेगा? क्यों? Who said to whom? कौन बोला? थोड़ी थोड़ी है, स्टेशनरी का कितना दाम धूम चलता है, पता है क्या? बहुत रिक्वायरमेंट है कोचिंग में, तो पैसा ही पैसा है। मैं आपको अगर बताऊं ना, तो बिलीव मी, पैसा ही पैसा है। तो वड़ा पाव भी बहुत सारे रहे। एनएस रोड है ना, मुलुंड का एनएस रोड, एक लाइन में जाएगा ना तो गजानन, भाव, फिर जम्बो के लाइन में बहुत सारे रहे, बहुत सारे। फिर भी वो लोग आजू बाजू में ही खोलते। ना, ये सब इमोशन से, इमोशन। चल 20 रुपए का वड़ा पाव से पेट खराब हुआ, तो क्या होगा? लूज होगा, दवाई होगा। दिस इमोशंस। प्रैक्टिकली बिजनेसमैन, 20 लाख रुपया है, आपका खुद का पैसा है, आप इन्वेस्ट कब करेगा, कैसे करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन MEC। एनीबडी? नहीं, मतलब पूरा लिखना पड़ेगा। इट डिपेंड्स अपॉन मार्जिनल efficiency of capital. What is MEC guys? Read full form. मेरे इन्वेस्टमेंट को मुझे कमा कर देने की क्षमता कितनी? If I am putting 20 lakhs in my business, what is the expected returns on my investments? That is called as what? Exactly. You will evaluate कि भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट में 30% छूटता है, क्लाउड किचन में 20% निकला, स्टेशनरी शॉप मार्जिन कम 10%, क्लोथिंग में भी समझो 40%, और वड़ा पाव स्टॉल में समझो 25%। क्या करेगा?
क्यों? कमाकर देने की क्षमता ज्यादा है. And that's your step number 3, which is called as selection. So your business economics works on how many steps? Number 1, you will पूरा पढ़ना था. Various course of, or from that you will take a rational, which is based upon, this decision making is based upon, which is your expected returns on, and then you will go for. So that's the difference between economics and. अब दोनों में आपको ज्यादा प्रैक्टिकल कौन सा लगा? That's what the difference between 12th standard and CA foundation is. मार्शल ने तो कोई भी लॉ दिया, पहला बोल दिया अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अनाप शनाप बकवास वाहियात अजम्पशंस लिए उसने. ठीक है, बोले तो पढ़ रहे हैं, बट मोर रियलिटी इज बिजनेस इकोनॉमिक्स. व्हाट यू स्टडी मार्शल्स लॉ वाज इकोनॉमिक्स. जो हम पढ़ेंगे यहां पे ना नहीं है, लेकिन हम इसको अपोज करने वाले भी लोग आएंगे इन योर सीए फाउंडेशन जो 12th में नहीं. Are you guys getting this? Is that clear? Yes, it is. लिख दो ना. डाउट है? डाउट है? हैंड राइटिंग समझ रहे? नहीं समझता तो तुम्हारा गलती है. ओके, प्लीज राइट बिलो दिस. इट्स द सेम पॉइंट, लेकिन नेक्स्ट लाइन में लिखना. मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल refers to marginal efficiency of capital refers to the expected rate of returns on investment. Expected rate of returns on investment. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन. देखो शक्ल पे बुक बंद कर रहे पब्लिक इधर. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज. कितने बजे आए हो सुबह? बस ज्यादा जल्दी नहीं आए. सब मुलुंड में ही रहते हो ना? ओहो, अलग कॉन्टिनेंट से लोग आ रहे इधर. Business economics is also known as managerial economics or applied economics or applied economics. That is I.E. applying economic theory. Applying economic theory in business for making rational judgments. Decision लिखना, judgments के बदले, sorry, for making rational decisions. For making rational decisions. Yeah. Full stop. So this was a small demo introductory about what is economics, what is business economics, and I hope जो भी आज हमने किया है, सीखा है, क्लियर है. नेक्स्ट लेक्चर से we are going to start with
सबसे बड़ा टॉपिक ऑफ योर सीए फाउंडेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 2, जिसका वेटेज इज ऑल्सो मोर, विच इज 15 मार्क्स. वाई एम स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 2? बिकॉज नोन टू अननोन जोन में बिलीव करता हूं, उसमें बहुत कुछ है जो आपको थोड़ा आता है. ओके, सो बुक मिल जाएगा. कैरी वन एक्सक्लूसिव नोटबुक. इट वॉज नाइस टू सी यू ऑल गाइज. सी यू अगेन ऑन नेक्स्ट वीकेंड. थैंक यू सो मच. हो सके तो खुद के घर जाना, थोड़ा रेस्ट करना, लंच करना और प्लीज थोड़ा पढ़ाई करना. तो वो टाइम पे पहुंच के लंच करना.